Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So starting with our news analysis for 14th of December and taking up the Hindu newspaper first. So we've been talking about ki एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए वी बिन टॉकिंग की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस की गई है उसमें न्यू एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं सो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में as we go through this advertisement so it is showing that reshaping the landscape of business education this is specifically for business and management so there would be top notch international and domestic faculty so in this context under the NEP we have been introducing and we can say welcoming the foreign universities and encouraging them to open their campuses in India. So can you name one example of which is going to be the first foreign university in India and where it would be like opened up? What is the location? ऑस्ट्रेलिया गुजरात में ओपन होगी It is यूनिवर्सिटी Deakin University would be the first foreign university. Second, it is saying dedicated career services and the industry connect. This we were talking about this yesterday also. There needs to be a connect between the jobs or the skills which are in high demand, and accordingly, the curriculum should be reshaped. It should be reformed in that context. So there should be more synergy between the two. Then, thirdly, would be student friendly and sustainable campuses. So here we can talk about that the buildings, they must be resilient to the disasters that we are seeing. We are seeing more number of earthquakes, specifically in northern India mein, because this region lies in high seismic zone. You need to find out ki kaun sa seismic zone hai, the number, exact number, and total kitne types ke seismic zones hote hai. So you can search for that. And student friendly, in this context, we can talk about the relationship between the student and the teacher and the changes in the curriculum we talk about more vocational education would be promoted and we can also talk about making inclusive infrastructure inclusive it needs to be friendly to the persons with disabilities so their ease of communication and access to the infrastructure that needs to be promoted under this. ऑल्सो हमारे कोर्सेज में वो लोग भी होने चाहिए जिनके पास ऑन फील्ड एक्सपीरियंस होता है जो कि मतलब ऑन फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं रादर देन जस्ट टीचर्स उस फील्ड में. Okay. So COP28, we've been talking about this every day. Ki India supports phase down and not phase out, and even the developed world, it calls for phasing out. But again, यहाँ पे dichotomy दिखती है, and as we say कि we're talking about just energy transition. So it needs to be just in nature in the context that the interest of the developing nations should also be factored into. So it is like this can be one of the examples when we say developed world versus the developing countries. So COP28, it calls for transition away from the fossil fuels. This we know we've been talking about what can be the sustainable alternative fuels to the currently used fuels like we're using petrol and diesel or the crude oil or we can say alternative to coal. So in that context, we see certain examples and also initiatives being taken by the government. So we are seeing we are promoting green hydrogen mission. In green hydrogen, there is the byproduct is only we can say water vapors and electricity which can be generated. Then we're promoting fossil fuels. Then we are sorry, fossil fuels, fuel cells. Then lithium ion batteries is one part of that. So these are certain measures which are being taken up. And here, what is important is this global stocktake report, which is published by UNFCCC. And here it says countries were expected to account for actions undertaken to fulfill the obligations under the Paris Agreement. So Paris Agreement is come into force from 2020. So the target is to keep the emissions on track below 2 degrees Celsius. And so Stocktake found कि जो steps अभी लिए जा रहे हैं by different parties and countries, they see कि even the most optimistic case की अगर हम बात करें तो वो क्या possibility हो सकती है तो it would be 5% reduction in the emissions by 2030 when we compare it to the 2019 levels. And it should have been 43% actually जो idealistic
target होना चाहिए था, but it would be just 5%. So you can imagine the gap that exists. So it clearly indicates when we talk about the challenge of climate finance, although we've been seeing ki loss and damage fund and jo amount allocate gaya hai, it is very less, like it is only in millions, whereas we require trillions of dollars of rupees actually to fight the climate change in terms of the measures that we require for mitigation or be it adaptation to it. So this is there, and creating a path to net zero greenhouse gases emissions by 2050 is humanity's best shot at keeping global temperatures. So India's target year is 2070, not 2050. So India votes in favor of immediate ceasefire in the Gaza by Israel. So when we talk about India's stand, so can you just tell me the keywords here when we talk about what has been India's stand as far as the Hamas-Gaza war? It talk about this. India supports two-state solution. Yes, we support two-state solution, and there's one more. Terrorism, Yes. condemns terrorism in any form. Yes, so India does not support terrorism in any form anywhere in the world, and that's there. Then yesterday we saw कि smoke canister strike by two visitors sets off chaos in Lok Sabha. मतलब, uh, two people in their youth, they entered the Lok Sabha and they had this canisters जिसमें से colored smoke was there. So it raises questions over the security of the parliament. This is one important topic when we talk about internal security. And yesterday it marked 22nd anniversary of the terrorist attack which was there in the parliament. So happening it yesterday and they made it so easily inside the parliament, inside the Lok Sabha, raises questions over the security. And we've seen ki sare MPs present the, it was between the sessions of the Lok Sabha. So we can talk about 2004 में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसके बाद कुछ चेंजेस लाए गए हैं स्पेसिफिकली जो उसके बाद लाए गए हैं. like parliament attack was there in 2001. So when we talk about what changes have been done, so we can talk about like we have more stringent changes have been done in different acts, like we have the UAPA Act, the Unlawful Activities Prevention Act, and there were two acts like TADA Act था जिसको now it has been repealed. So एक तरीके से पूरा जो chain of acts पहले होती थी they have been removed accordingly, जिस तरीके से we can say कि the risk has been risk and जो nature of attacks है that has been changing. So that is there, and we have the National Security Guard, the National Investigation Agencies. So NSG was formed after the 28/11 sorry, the Mumbai terror attacks, and NIA was after the 1984 attack जो Blue Star Operation के context में, और मतलब Golden Temple पे जो terror attack हुआ था उसके बाद we had the NIA, National Investigation Agency. So Central Tribal University would be formed in Telangana state. So it's regarding bill pass kiya gaya in the house. So this can be taken up as one of the steps dedicatedly when we talk about the welfare of the tribal population. So can you name the schedules of the constitution which talks about tribal welfare? Schedule 5. Yes, schedule 5 and 6. So Samakka Saraka Central Tribal University. This is the complete name. And apart from this,
The repealing and amending bills cleared by the Lok Sabha on 27 July proposes to repeal outdated laws. So outdated laws जिनको हम repeal करने की बात कर रहे हैं. These are the examples like Land Acquisition Mines Act 1885 का act है, Telegraph Wires Unlawful Possession Act 1950. So इस जो ये Telegraph Wires Act की बात कर रहे हैं, इस एक्ट को स्पेसिफिकली यूज किया जाता है अगेंस्ट द केसेस, और वी कैन से कि अंडर दिस एक्ट वी हैव जो फोन टैपिंग होती है या वायर टैपिंग के थ्रू हम कर सकते हैं फोन को टैप. सो दैट कैन बी डन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ओनली अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. और ये एक एग्जांपल हो जाएगा कि दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स डीकोलोनाइजेशन आल्सो. So this is one component of relocation of slum dwellers जब हम बात करते हैं again sustainable urbanization की और planned urbanization, because when we think about urbanization, so हमेशा outskirts of the urban areas में we see slum dwellers or colonies coming up. So here we see कि illegal colonies को regularize करने के लिए a bill has been tabled in the capital, in the parliament house. And unauthorized buildings, like यहाँ पे when we talk about private sector क्या important role play कर सकता है, तो मुंबई में जो एशिया का सबसे बड़ा धारावी स्लम है, उसमें we are seeing private sector would be playing important role जब हम planning की बात करते हैं and reinvestment की बात करते हैं. तो जो temporary structures हैं या जिसकी वजह से again disease burden, disease spread होने के chances भी बहुत ज़्यादा हैं. So different schemes जो हैं they would be implemented, like when we talk about health के context में there would be schemes education के लिए. तो एक proper planning and concrete structures would be there. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is there and then आवास योजना is there. तो उसके under we can go for again proper systematic and planned development. सो सिटीज अलायंस एक्शन प्लान है जो डिस्क्राइब करता है स्लम्स एज नेग्लेक्टेड पार्ट्स ऑफ सिटीज वेयर हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशंस दे आर अपैलिंगली पुअर. ट्रू. सो ये अटैक अभी पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में जो अटैक किया गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? तो सिंपल रीजन ये था कि द यूथ और द अटैकर्स दे वर अपसेट विद नो जॉब्स एंड prices are high over inflation. So this is reflecting actually कि ground situation क्या है, कि they had to actually take this step. So police interrogation reveals कि जो भी 6 suspects है, they had known each other for 3 years, families of 3 they deny and all the breach plan. So job sector में जब हम बात करते हैं इंडिया में क्या major challenges और problems हैं and what should be done for that? आई थिंक सबसे पहले तो डिमांड के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा स्किलिंग नहीं हो रही है, और कॉलेज लेवल पे अगर बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज और भी ज्यादा होनी चाहिए. Okay, और कोई measures? गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स है कि वही करनी है, या फिर स्टार्टअप्स वगैरह के लिए जैसे अब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उस चीज को और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है ताकि सिर्फ जॉब क्रिएशन के ऊपर ना रहे, स्टार्टअप्स की तरफ भी मूव किया जा सके और स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके. जैसे 3 मंथ डिप्लोमा प्लान्स इस तरह से लाए जा रहे हैं, स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो उनको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, उनके लिए अवेयरनेस की जा सकती ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज में और ज़्यादा सिनर्जी और ज़्यादा कोऑपरेशन लिंकेज और ज़्यादा होनी चाहिए. एंड प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में एक जो सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि प्राइसेस 2 रीजंस की वजह से इंक्रीज हो सकते हैं, या तो सप्लाई इज रिड्यूसिंग और वी कैन से सेकेंड रीजन कैन बी डिमांड इज वेरी हाई.
सो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वी आर सीइंग कि फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, which is also causing the headline inflation to be very volatile. So the main reason behind this inflation is because of the supply side issues. So यहाँ पे we say कि rather than going with the monetary policy, वो इतना ज़्यादा effective नहीं है in controlling the supply side reasons behind the rise in prices or the rise in inflation. It is a fiscal policy which can be more apt and more suitable in terms of controlling the supply side inflation. So this is also one of the concerns even that is shared by the monetary policy committee members also. So in India के context में, however, we are seeing कि repo rate अभी high level पे है, it is at 6.5%. बट फिजिकल पॉलिसी मेजर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिजिकल पॉलिसी मेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव आल्सो सीन की हाउ गवर्नमेंट इज कमिंग फॉरवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी व्हेन वी से कि इट इज गोइंग अहेड विद द ओपन मार्केट सेल्स, शॉर्ट टर्म मेजर्स की अगर हम बात करें, इट इज बैनिंग द एक्सपोर्ट्स. सो ये कुछ मेजर्स हैं, बट ओवरऑल अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, सो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. And in that context, we are coming up with how we can reduce the logistics cost. We have introduced the Kisan Rail also, so that again we can reach to far off locations. और ज़्यादा supply chain linkage हम create कर पाए. The supply chain remains more smooth, and we are promoting horticultural crops given the climate change at the same time. तो एक वो challenge भी exist करता है. तो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक challenge है. So there are multiple things happening at the same time, so that needs to be taken care of. So दोनों monetary policy, fiscal policy दोनों important है, but यहाँ पे हमें ये समझना important है कौन सा ज़्यादा effective है. तो यहाँ पे जैसे कॉन्सेप्ट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है या फिर इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं? नहीं, interchangeably use नहीं करते. There's a difference. Unemployment is कि you are seeking for job and you're ready to work at the current market wage rate, but you are not able to find a job. So that is unemployment. And यहाँ पे voluntary और involuntary unemployment दो term हम use करते हैं. तो जो voluntarily unemployed है, they are not counted in the unemployment rate. And underemployment में we talk about section specific. Suppose एक particular section है, या we talk about the women only कि they have only 30% labor force participation rate. So they are underrepresented, या women they are underemployed. So here underemployment we talk about the share or the proportionate share that they have in the employment or the job sector. तो इंडिया में मतलब कौन सी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है We जो can't say ज्यादा मतलब चैलेंज कॉज कर रही है? we can't say कि कौन सी ज्यादा बड़ी है. दोनों ही बड़ी है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अपनी जगह दोनों का रेलेवेंस है. ओके. So we can say कि artisans के लिए when we talk about the construction the Ram temple, so एक ये initiative है, campaign to weave the clothes for the deity in the Ram temple. So this would be helping in again इसका जो impact होगा on the artisans in terms of increasing their employment, or they would be also having an opportunity to showcase their skills. And this is again how we are supporting going vocal for local. So weaving the vastra, the clothes for the deity in the Ayodhya temple. So दो धागे श्री राम के लिए campaign has been organized by the Heritage Hand Weaving Revival Charitable Trust. So this is an example of the civil society organization also. And at the same time, this is also one of the ways how we can promote the handloom industry. We are seeing कि more mechanization की वजह से electric handlooms हैं. So handloom industry जो manually आपको work करना पड़ता है, they are also on the decline. So जो हमारा actual cultural heritage है, that is declining with this. So specifically, we see the concentration or specialization of the handloom industry in southern Indian states. So that can be again revived back. So this is one example how it can be done. And like Sudha Mini Handloom is the name. They have been running stores also
offline or online. So this can be, we can say कि even social media का भी important role है. They can run online stores and e-commerce platform पे. So clothes are dyed in organic colors, like turmeric हम use करते हैं yellow color के लिए, rose petals for the pinkish red. So this is one important feature. And zari, silver, gold thread work हम zari work बोलते हैं. Apart from this, हम ये भी देख सकते हैं कि सदर्न इंडिया में जैसे कांजीवरम साड़ी बनाई जाती थी, जो उनको वेवर्स बनाते थे, वो उनका भी कल्चर कम हो रहा है क्योंकि मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो उस चीज को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि उसको, जो उनका कल्चर है उसको संभाला जा सके, उसको प्रिजर्व किया जा सके। right. हाँ, इसकी वजह से we are seeing कि people have also lost their jobs who have been involved in this for so many years. So it is not just कि mechanization के through speed और efficiency increase होगी या cost of production reduce हो सकती है over a longer time period, but again जो हमारी cultural part है, जो उसका जो element और जो essence है, वो आप हैंडलूम के थ्रू ही लेके आ सकते हो. इट कैन नॉट बी डन विद मैकेनाइजेशन. जैसे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. हाँ, हेरिटेज को बचाया जा सकता है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर होती है वो चीज रुक गई है, क्योंकि मशीन्स के थ्रू जल्दी बनाया जाता है, तो उनको उसको प्रिजर्व किया जा सकता है कि किस तरह से। यस, राइट. सो केरला का कहना ये है कि सेंटर इज नजिंग अस टुवर्ड्स फाइनेंशियल क्राइसिस. मतलब ये टर्म यूज किया जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस. सो सुप्रीम कोर्ट में केस लिया गया. केरला सेज कि स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू रेगुलेट इट्स फाइनेंसेस. इट कंटेंड्स दैट सेंटर्स रीसेंट एक्शंस, अमेंडमेंट्स और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रहे, दे हैव रिड्यूस्ड केरला टू अ स्टेट ऑफ पेन्यूरी. सो when we talk about again financial devolution, या financial relationship between the center and the state, so that is also an example of cooperative federalism and competitive federalism. So unless the net borrowing ceiling, it was fixed by the Kerala Fiscal Responsibility Act 2003, that is restored to state. का कहना ये कि it is apprehensive that its treasury operations will starkly they will be curtailed. So we need to exactly look into कौन से subject में and कौन से list के under this would be there. So violation of the federal structure of the governance and causing severe damage to the economy of a small state. एंड नेट बोरोइंग सीलिंग जो सेंटर ने इम्पोज करी है, सेंटर ने फिक्स करी है कि स्टेट्स कितना बोरो कर सकते हैं, तो वो सीलिंग फिक्स की गई. तो एक इशू वो है विच वुड बी अगेन कि स्टेट कितना बोरो कर सकती है, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन की तरह वो एक्ट कर रहा है. So let's see कि what would be the final take of this on this issue by the Supreme Court. यहाँ पे सिर्फ एक व्यू है कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या मानना है. आर्टिकल 293 के अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्टेट अपने जो भी फाइनेंसिस है उनको अपनी इच्छा के अनुसार तय कर सकता है, और जो फाइन राजकोषीय अधिनियम 2003 है उसके उसके अंदर ये गिवन है कि स्टेट डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कितने उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और जो इकोनॉमिकल को स्थिर बनाए रखने के लिए चाहिए, वो उस हिसाब से अपना फाइनेंस तय कर सकते हैं कि कितना उन्हें बोरो करना है और कितना नहीं करना। तो दो हाँ जगह एक्सप्लेन हाँ, मिलता है। एक और कंडीशन है, नाइस मेंशन, कि जब किसी भी स्टेट का सेंटर के टुवर्ड्स कोई डेट ऑब्लिगेशन है, तब सेंटर इम्पोज कर सकता है बोरोइंग लिमिट स्टेट के ऊपर. अगर वो ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट का, हाउएवर वो मतलब प्रैक्टिकली ना होना बहुत डिफिकल्ट है, तो उस केस में आई थिंक कि सेंटर को ऐसा बोरोइंग लिमिट या बोरोइंग सीलिंग स्टेट के ऊपर नहीं इम्पोज कर सकता है. सो वील हैव आर्टिकल 1 हाँ कितना सीलिंग और वो हम बोल रहे. सो आर्टिकल 293 एंड सेकंड आर्टिकल कौन सा था दिव्या? आर्टिकल 131 के अंदर वो स्टेट और सेंटर के लिए कोर्ट में होते हैं फाइनेंसिस को लेकर ओके, इन्वॉल्व। ठीक है. एंड आर्टिकल 280 इज रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन. सो यहाँ पे लिखा केरला हैड ऑलरेडी सफर्ड क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर लॉस या रिसोर्स डेफिशिएंसी इतना है, तो इतना उनको एक्चुअली बोरो करना पड़ेगा. ₹1,07,513 crore rupees. This is between 2016 and 2023.
So अगर suppose financial crisis होती भी है केरला में, so it can also have unwinding effects upon the other states also. So it is important कि this thing is tackled at this particular level only and not to be allowed to spread to other states also. You can take up धारावी also, मतलब ऊपर वाला में कौन सी? कहाँ पे? ये धारावी प्रोजेक्ट नीचे. उसका नीचे स्क्रॉल करो. अरे हेडिंग क्या है? अच्छा ये कांग्रेस सेना UBT protest against the Dharavi project. So we go into the reasons. Adani Group would be redeveloping this, and they accuse ki they're neglecting the welfare of the residents of the slum clusters. So welfare में it is important कि we are ensuring कि मतलब अगर they have to be rehabilitated to another region, so that needs to be taken care of, and their employment is very important कि कौन से एरिया में they'll be relocated या सिर्फ उसी एरिया में रीडेवलपमेंट की ऑल दो बात की जा रही है. सो वहाँ पे आई थिंक हाई राइज बिल्डिंग्स कुछ बनाई जाएंगी. एंड वेलफेयर में धारावी एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम क्लस्टर्स हैं एंड इट इज़ अ हब फॉर द इवन स्मॉल स्केल और जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज है मुंबई में. सो कहाँ पे वो इंडस्ट्रीज शिफ्ट की जाएंगी, उनको क्या डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो अगेन उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक सबसे बड़ा कंसर्न है गिवन द स्केल ऑफ दिस द धारावी जो स्लम एरिया है. सो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि this project is allegedly favoring the Adani group and impacting the small scale industries. So it is important to protect the interest of the small scale industries, MSMEs जो है. We talk about कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ 90% contribution MSME सेक्टर का है. So we can't destroy them क्योंकि again उनके जो skills हैं, जो work वो करते हैं, they are very important, they're very critical, specifically foundational level पे. So resettling 68,000 people, including slum dwellers and those with the commercial establishments. So it is again an example of growth versus development. Ownership of the transferable और फ्री development फ्लैट rights मिलने के for बाद free. क्या वो सस्टेन कर पाएंगे वहां पे जिन लोगों को रिहैबिलिट किया जाएगा? क्या बोल रहे हो, क्या सस्टेन कर पाएंगे? जैसे जो भी रह रहे हैं धारावी में, तो उनको रिहैबिलिट करके कहाँ पे मतलब भेजा जाएगा? हाँ यहाँ पे क्योंकि लिखा वहां पे तो है हाई राइज बिल्डिंग बनेंगे, तो उधर ही shifted. उनको नहीं, I think few people would be resettled there only and few यहाँ पे लिखे धारावी residents they will be, मतलब I think ये सबकी बात हो रही है कि they would be shifted 10 kilometer away from the existing location. So इतने सालों से वो उस जगह पे रह रहे थे, तो again एक familiarity भी develop हो जाती है. So that would also get hampered. आप उसको कैसे save कर सकते हो? So that's there, वो पूरा environment change हो जाएगा वहाँ पे. एंड एक और फैक्ट मैं ऐड करना चाहूंगी कि धारावी जो स्लम है, इट बिगेन मतलब जब इस्टेब्लिश हुआ था तो वो वहाँ पे 1884 में वहाँ पे स्टार्ट हुआ था. So you can imagine कितना लंबा time period है. They've spent centuries over there. So Gaza, a new pointer to India's changed world view. So India का world view कैसे change हुआ है, how it is reshaped after the beginning of this Israel-Gaza war. So, okay, you can talk about important geographical locations until I, just scan through this article. You can mention कौन सी important geographical locations है around Israel and Gaza. Karuna, what are the important geographical locations? You can name them. एक तो अगर हम बॉर्डर क्रॉसिंग की बात करें तो जो साउथर्न साइड पे पड़ता है, एक राफा क्रॉसिंग करके है So जिससे इजिप्ट के. right. It is between Egypt and the Gaza Strip, right? यस. और क्या important locations हैं?
गाजा स्ट्रिप की बात करें तो वो इसराइल इजिप्ट के बीच में पड़ती है, मेडिटेरियन सी से कनेक्टिविटी। ठीक है, और कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उस रीजन में? जॉर्डन। जॉर्डन है। ठीक है। और जॉर्डन लैंडलॉक नहीं है, उनका भी लोकेशन है जो इसराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया के बीच में। तो हम्म मेन जोग्राफिकल फीचर्स है वेस्ट बैंक, दैट इज बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, गोलन हाइट बिटवीन इसराइल एंड सीरिया, देन डेड सी। तो डेड सी और एक और है सी ऑफ गैलिली। तो सी ऑफ गैलिली गोलन हाइट के बीच में, और डेड सी इट इज बिटवीन वेस्ट बैंक एंड जॉर्डन। तो ये तो, एंड सिनाई पेनिनसुला इट इज इन इजिप्ट, पोर्ट ऑफ हाइफा नॉर्दर्न इसराइल में टुवर्ड्स द मेडिटेरियन रीजन। तेल अवीव भी उसी तरफ में, नॉर्दर्न। हाँ, तो तेल और अवीव। जेरूसलम कहाँ पर है? वेस्ट बैंक में। तेल अवीव पहले इट वाज द कैपिटल ऑफ इसराइल, और आज के टाइम में व्हाट इज द कैपिटल? तेल इसराइल। अवीव भी है कैपिटल। नहीं, अभी नहीं है आशिक। अभी वी हैव जेरूसलम, which is also recognized by USA also. हाँ, चेंज हुआ था, सही बात है। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी में कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, तो वी हैव बीन अगेन, जो हिस्टोरिकल गाइडेंस है, हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है द वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म, वहाँ से वी कैन से कि फॉरेन पॉलिसी हमारी जो स्टार्ट हुई, जो आइडियाज थे, तो 200 years ऑफ फॉरेन कंट्री स्पीकिंग ऑफ इट ऑन द वर्ल्ड स्टेज, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियंस दे लेड बाय द फियर्सली एंटी colonial जवाहरलाल नेहरू, they were not willing to surrender the freedom. So strategic autonomy एक हमारा ऑब्सेशन बन गया, बिकॉज जो हमारा एक्सपीरियंस रहा बीइंग अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, सो उसमें वी सॉ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉन अलाइनमेंट ना मूवमेंट सॉ द इमर्जेंस, सॉ द बर्थ, एंड देन वी वर ट्राइंग टू मेंटेन नॉन अलाइनमेंट, मतलब कि हम फेवर नहीं कर रहे थे, वी वर न्यूट्रल, एंड जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होते थे अकॉर्डिंगली वी हैड आवर ओन इंडिपेंडेंट स्टैंड, and we were equidistant between the superpowers. We were not no completely favoring either USA or Russia or China. So we यहाँ पे ये इसलिए equidistance the word that is being used. We have always supported multilateralism, ना हमने unipolar world support किया या bipolar world support किया. We always go for multilateralism. And also India's moralism, it was against imperialism या apartheid, जो South Africa, African continent की हम बात करते हैं, that often manifested itself as anti-Westernism, and indeed on such matters found itself ranged alongside the USSR against the West, even while the country set for adherence to democracy, diversity. And इसके अलावा अगर हम बात करें तो Israel, it was indeed established, India duly extended recognition, हमने recognize किया इसराइल को, but again जो हमारे relations थे consular level पे, they were, we could maintain them for four decades, 40 years के लिए, and India became the first non-Arab country to recognize even the Palestine Liberation Organization 1974 में, and so Palestinian state को हमने recognize किया 1988 में, 1992 में हमारे relations इसराइल के साथ और upgrade हुए at the ambassador level. So turning point कब हमें देखने को मिला? When we saw कि पाकिस्तान enabled Islamic militancy, जब इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हमने देखे गए, टेररिस्ट अटैक हुए, so that prompted India to see greater merit in warmer relations with Israel. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि both the countries they were sharing similar enemies, that is Islamist extremist. Like अगर हम हमस की बात करते तो that is also an Islamic resistance movement. So that's why एक ये हमारा बोल सकते हैं कि common point बन गया of cooperation, and both were enduring terrorist attacks from self-declared holy warriors, security intelligence cooperation. Successively जो आगे governments आई इंडिया में, conscious of the sympathies of India's own substantial Muslim population, we continue to extend support to the PLO also, to, as we know कि we support the two-state solution, and India-Israel relationship appreciably
strengthen होती गई with time period. हमारा we can say कि defense equipments, defense relationship और strong हुई, intelligence cooperation increase हुई, and surveillance softwares like जो Pegasus controversy थी, that was also being said कि Pegasus जो है it has its origin from Israel. Apart from this, the relationship between the prime ministers of both the countries, it symbolizes the extent of their closeness. मतलब personal relationship, जो personal warmth है of Benjamin Netanyahu is the prime minister of Israel, and Indian prime minister Narendra Modi. So this also symbolizes their closeness. And apart from this, we also use one keyword is de-hyphenation of the ties. So India का again एक neutral, एक independent और sovereign stand रहा as far as how our relationship has evolved when we talk about Israel and Palestine.